So every time there's something, in the screenplay, twist and turns, जहाँ पे emotional होता था, it used to really mess me up. Now, if it was somebody else, me being a very limited performer, I would have had a huge problem. It would look fake, false. ये एक सवाल पूछना था कि आपका जो भूलापन है रियल लाइफ में, वो पिछली 2 फिल्मों से नजर आ रहा है. वो ढोंग है. No, it's a phenomenal success. Bahubali, it was amazing. I haven't seen the film yet. I'm going to see the film, but this doesn't matter. Doesn't matter. हर एक फिल्म की एक तकदीर होती है. अब इस फिल्म की ये तकदीर है. इस फिल्म की तकदीर देखेंगे. वो कैटरपिलर को ऐसा लिया और बात करते करते उन्हें फोन फेंक दिया बालकनी से. The strange thing is that, whenever I see, the trailer or the song, and I see Om Puri, Om Ji in this, it just kills me. Because, I've done a lot of work with Om Ji since, years and years. And one moment he was there, and the second one he was gone. So it just... I don't actually enjoy watching the teaser or the song because I see him right there, and one morning we hear that he fell down and he was no more. This is my reaction. I don't know how you guys feel. I killed it for you, right? No, it's overwhelming. Kabir, I'll come to you now because the way he started with this entire story, I killed it. Right? I had to. Kabir, your journey with him, right from Ek Tha Tiger, then Bajrangi Bhaijaan, and now, what has changed? I'm sure something must have changed for you that now with the third film that you're doing, the whole relationship must have taken a different turn? Yeah, I think like any relationship, there's an evolution. And the more you work, the more time you spend together, you begin to... I'm sounding like I'm describing a marriage. He's talking about Mini, not me. No, but I'm micro Mini. You begin to sort of understand each other's sensibilities. You begin to understand each other's politics about issues. And that's what's been great. I think, a lot of people have told me that I've done 3 films with Salman and are you only doing this because he's a superstar? But I think I'm really, really fortunate that I've got, of course, the greatest superstar in the country, but I've also managed to do 3 very different films. I managed to get subjects that both of us were equally excited about. And that's the only reason the films came together, because the moment the 2 of us heard that story or decided that this is what we want to do, we were equally excited and passionate about it. From what I've read, you wrote this film especially for him, but it's not the exact Salman Khan film that we associate him with. Your films have always been different when it started. This film, the seed of the idea came from a film called The Little Boy, which I'd seen, and there was something about that idea, the germ of the idea that got stuck in my head, and we got in touch with the filmmakers and said, can we take the idea and adapt it to our context? And then once... And one visual of that black label ka kuch. Yeah. There was an ad which sort of we put the 2 together and said there was an ad about 2 brothers, and I said, this is an idea that I like to develop. And when I bounced it off Salman, he thought it was a beautiful character, it was a nice story, and that's how it began. Then I started developing the screenplay. Sohail, to be real life brothers. For me, you don't have to ask anything. It's a no-brainer. I have Salman Khan, I've got Kabir Khan, so it's a no-brainer for me. I have to ask you this. When the cameras come on, you real life brothers, but when the cameras come on to play those real life brothers, does anything change? मतलब वो जो भाई का रोल आप play कर रहे हैं on screen, जब shoot हो रहा होता है, does anything change from your real life chemistry? No, nothing. In fact, when people ask me this, I think it comes easier. We just bring our real life chemistry into real life. And that was very important for me, because the thing is that otherwise if it was another actor, you have to build in the screenplay a lot of scenes to show the love between 2 brothers. Somehow when you see Sohail and Salman together, it's at one shot and okay, let's proceed from here. You don't need to build it anymore. So it's like a really emotional film. Okay, there's no hard work in this film like in Sultan or in Tiger, running off, jumping off, kushti, utha, patak, all that stuff. But emotionally, this one was really draining.
because Sohail and me, um, our brothers, and we're playing brothers here. So every time that something, in the screenplay, twist and turns, jahan pe emotional hota tha, it used to really mess me up. Now, if it was somebody else, me being a very limited performer, I would have had a huge problem. It would look fake, false. So the best thing, yeah, everyone knows that. So. No, I don't think after this film you'll say that. This is like really. No, they will say it. They will say it. They will say it. and I'm happy that they say it. I like the rewards. I don't like the awards. Award function में perform करने के लिए I like that. Award के लिए मत बनाओ भाई. So it became really easy for me. Acting wise, because I was not actually acting, but emotionally it was really draining. Even when I was dubbing, it's embarrassing that a grown man, standing there, and it's a movie, and you're dubbing there. I mean, chalo, you're acting, your brother's not there. You have this thing that gone to war, whether he's going to come back, not come back, emotion. But when you're dubbing, so you're just, just lip syncing and dubbing that thing, tears coming out. That was really bad. Okay, so I think now... And coming from us, it's really bad. So there was a time where my dad and my mom and Bheju Chacha, they came to see me in jail. So my uncle saw me after a very long time. He says, how's it going? This is good, nice one-bedroom suite. It's cool. So my dad smiled. My uncle started crying. So my dad said, yaar, tum kaise padhan ho jao yaar, bahar jao yaar. Okay, so for the next bit, I would request all of you to now turn off your cameras, because now we're going to launch the trailer. So, आपको अपने cameras जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे, ठीक है? Yeah, but really we'd like to. क्योंकि वो रात को 9 बजे वैसे आएगा, लेकिन we can't. We're going to give it to you, but if you record it and then release it, it won't look nice. There's a lot of work that's gone into it, so please, if you could switch off your cameras. If you could switch off your cameras. हमारा press बड़ा ही आज्ञाकारी press है. वो आपकी बात हमेशा सुनेंगे. Request करो. Request, तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप अपना कैमरा जो है वो अब switch off कर दें. विभा ने सुन लिया. Please. भारती. Just for the trailer. We'll be giving it in 3 hours anyway to you. Thank you. 3 घंटे का. बंद हुए. Of the film, Mr. Kabir Khan, Sohail Khan, and also now I would like to invite the producer and the CEO of Salman Khan Films, Mr. Amar Bhutala. So don't be surprised. You were completely comfortable in that chair. You don't want to get up. And the music director of the film, Preetham. किसी का चश्मा गिरा है यहाँ पे. काला चश्मा वो. Okay. Hello, gentlemen. Once again. This now has आपके सारे जो सवाल हैं वो पूछूंगा. So every single time I think आपका जब नाम कोई पुकारता है, आपकी मॉम का नाम भी उस नाम में है. She's a lucky charm for you. And इसमें भी she's a producer. You showed her the trailer. What was her first reaction जब फिल्म बन गई? क्या बोला उन्होंने कि? I think Amar showed her the trailer yesterday. उन्होंने भी पहली बार कल ही देखा? Yeah, so she saw it yesterday. Actually, the whole family saw it yesterday in the afternoon, and it was remarkable because she said something really sweet. She said, "I pray a lot before Salman's films come, but now because this one has Sohail as well, the prayers are going to be twice as much." She has to for me. She's got no reason to pray for him. She has to pray for me. He doesn't need the prayers. I need the prayers. But it's been such a long time that you both have been together. Are you mad? I needed more than all you guys put together. आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे ही बोल रहा हूँ भाई. Sohail, but such a long time that you've both shared screen space together in a film. जो पहले की यादें हैं and जो अब इस बार जो memories create हुई हैं, he's changed so much. Our last film together was Got to See Greater. So whatever we do after that would have been magical, and fortunately we got Tubelight to do. So it's wonderful having
shared the screen with Bhai. No, we've given some great films together. मैंने प्यार क्यों किया? मैंने प्यार क्यों किया? God कौन बोला वो? वीर. अच्छा. Hello, brother. You're all going to prom now. That was Arbaz. Yeah. Sorry. Yeah, but that was, as we always say, that Hello Brother was one of the most expensive home videos anyone can make. Kabir, I have to ask you this question. From the time the first song debuted, and Pritam da Eidi, every song has one signature step जो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं उसमें नाचते हैं and they copy that. Conscious decision or it just happens? ये एक signature step होता है. Yeah, see, obviously there's something called the hook step, which everybody does try and get in their songs. But with Salman, there's always been an attempt that, you know, Salman also believes that it should be a step that a child can dance to and can copy, because that's when they can truly enjoy that song. So it is, and also in this, the character is simple. Just he's definitely not going to do any great moves. He will do simple moves. So I think in a certain sense, it comes organically into the film like that. So you're an award-winning choreographer now. Did you choreograph this step also? What rubbish is that? वो वैभवी यार. But did you come up with this step, the hook step? It was by mistake. What is that? Poor thing. What Jaggu Miya. It was by mistake. That's Hiral. Of course. ये step किसने किया? ये जो main step है the radio. Remo ने दिखाया कुछ और हुआ कुछ और, and I thought that I'm doing exactly like how Remo was showing me. So आप हंसो मत, बाकी गाने अभी तक देने हैं आपको. पिक्चर रिलीज हो रही है, 3 गाने अभी तक आए नहीं. प्रीतम दा, your turn now. अब आपकी बारी है. गानों के बारे में हम बात कर रहे थे. दादा एक दिन बात कर रहे थे फोन पे. Yes, please, we need to. ये कहानी पता है. So दादा एक दिन फोन पे बात कर रहे हैं. अब किसी से बात कर रहे होंगे तो उन्होंने एक मकड़ी देखी और कैटरपिलर देखा. तो दादा being this musical person, very soft, tender, तो उन्होंने वो कैटरपिलर को ऐसा लिया और बात करते करते उन्होंने फोन फेंक दिया बालकनी से. ये फेंकना था और उन्होंने फोन फेंक दिया. दादा, people know the story ना, जब आप साइकिल भूल गए थे फिर गाड़ी भूल गए. नहीं, गाड़ी भूल गए थे. वाह. जाके कंप्लेन कर दिया पुलिस स्टेशन कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई. नहीं गाड़ी अब भी ली, चोरी हो गई. स्टूडियो चले गए, वहां से रिक्शा में आ गए वापस. Okay, one last question, but is it the toughest to compose for him because his songs, the larger than life personality, इनके गाने में भी वो झलकना चाहिए. Is it the toughest to make a song for Salman Khan? No, actually not. Obviously, एक तो सिक्योरिटी रहता है कि कुछ भी गाना बनाओ, आफ्टर ही एक्ट्स इन इट इट विल बी अ हिट. सो उसका कोई नहीं. बट ये मूवी बहुत because the characters are like that, it's based in the 60s, so वो सब restriction रहता है with that. तो वो सब mind में रख के गाना बनाने में obviously थोड़ा सा it's not like that you could put any item song or anything. Like you have to keep every character in mind, the situations in mind. वो हल्का सा restriction तो रहता है, but उसमें ही मजा आता है ना. तो normal गाना बहुत बना है. मेरे हो गए, अब आपकी बारी है, तो अपने तीर जो हैं आप जरा कमानों से निकालें. हाय, आलोक पूछना चाहता है सबसे पहले. मेरा सवाल आपसे है कि 60s में बेस्ड है फिल्म और नाम भी आपका लक्ष्मण है, सोहेल का भरत है, तो खुद की क्या तैयारियां थी कि 60 के दशक में अगर आप लक्ष्मण के किरदार में जाएंगे तो अपने लेवल पे आपने किस तरीके से? बहुत अच्छा सवाल है. कुछ नहीं. अमर सर, सच में कोई तैयारी नहीं थी अपने? हाँ, वो कुछ स्वेटर, शर्ट, ढीली पैंट और जूते पता नहीं कहाँ से मंगवाए कबीर साहब ने. यही तैयारी थी. जैसे कपड़े पहन लिए वैसे कैरेक्टर में घुस गए. नहीं, एक डिस्कशन होता है पूरे कैरेक्टर के बारे में, एक स्क्रिप्ट के बारे में. ऑब्वियसली इट्स अ होल प्रोसेस दैट वन गोस थ्रू.
एंड ये गाने जिस तरीके से गाना पिकअप कर रहा है रेडियो सॉन्ग, उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि हर तरफ सजन रेडियो टाइप का माहौल है। आलोक ही बोल रहा है उधर से ही। तो हाँ, तो ये तो गाना तो पिकअप होने ही वाला था, क्योंकि रेडियो है, रेडियो पे बजेगा रेडियो का गाना, तो जितने भी रेडियो वाले रेडियो का गाना तो रेडियो पे बजाएंगे क्योंकि उनको ही फ्री फंड की पब्लिसिटी मिल गई है। थैंक यू सर, थैंक यू। सलमान, नेक्स्ट क्वेश्चन। सलमान जी, आपने अभी ये क्या नाम है उसका? ओमपुरी जी के बारे में बताया था, ओमपुरी जी के, कि आपने उनको बहुत मिस किया। अन्नूपुरी नहीं नाम है ओमपुरी वो अन्नू मलिक है। हाँ यार, मेरे मुंह से अन्नू ही निकला था, बाद में साइड में पूछ लिया मैंने, ओमपुरी जी। तो मुझे पूछना था कि रीमा लागू जी भी आपकी स्क्रीन मदर है। हाँ, जी। उनके लिए आप So I've just lost, we just lost VK sir as well, which is, he was very close to us and amazing person. I mean, he was our hero. And then अभी मैं लीवा में शूट कर रहा था, तो सुबह को पता चला कि रीमा जी भी नहीं रहीं। तो it's really sad that I've lost, three very close people almost, in the last कुछ 3-4 महीने में। और मुझे एक सवाल पूछना था कि आपका जो भोलापन है रियल लाइफ में, वो पिछली 2 फिल्मों से नजर आ रहा है। वो ढोंग है। तो अभी ये ट्यूबलाइट में भी आप भोले भाले नजर आ रहे हो, बजरंगी भाईजान में भी थे, तो क्या ये आपका आगे? ये जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ, हाँ। अब सोच रहा हूँ कि ऐसा थोड़ा सा बन जाऊँ। ओके, थैंक यू। सलमान यहाँ राइट साइड में, सलमान लेफ्ट सॉरी लेफ्ट में, सलमान, कबीर, सोहेल, सबको मेरा नमस्ते। रेखा खान, नवभारत टाइम से। तीनों के लिए है मेरा ये सवाल, क्योंकि मुझे लगता है आप तीनों के लिए ये फिल्म बहुत ख़ास होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये ईद पर है। सलमान, एक तरफ आप अपने डायरेक्टर भाई के साथ में एक्टर के तौर पे आ रहे हैं, कबीर के साथ में ये आपकी तीसरी फिल्म है। कबीर, आपके लिए सलमान के साथ में ये तीसरी एसोसिएशन है, तो मैं तीनों से जानना चाहती हूँ कि किस तरह से ये फिल्म आप लोग के लिए ख़ास है, और स्पेशली ईद रिलीज़ है ये फिल्म। मेरी तो सारी सलमान के साथ जो फिल्में हुई ईद पे ही आई हैं, सो दैट्स बिकम लाइक पार्ट ऑफ द फेस्टिविटीज़। बट हर फिल्म स्पेशल होती है। आई थिंक जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, जब आप कहानी से एक्साइटेड हो जाते हैं, तो हर फिल्म स्पेशल बन जाती है। आई थिंक आई एम एज एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एज आई वाज अबाउट बजरंगी भाईजान। If you're not interested in something, तो बनाओ क्यों? अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो फिर there's no point making it। तो वो स्क्रिप्ट लेवल पे ही वो पिक्चर रुक जाती है कि किसी ने आके एक बहुत ही ख़राब स्क्रिप्ट बनाई, सुनाई हमें, तो हम क्यों करेंगे? जब तक कि वो आपको फैसिनेट नहीं करती, जब तक कि वो स्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, ऐसा लगे कि भाई हर चीज़ छोड़ के इसी फिल्म को स्टार्ट करना चाहिए, जब तक कि आई डोंट थिंक एनीवन डज अ मूवी एनीमोर। सलमान नहीं, for me this journey has been wonderful. I've always been a Kabir Khan fan. Actually, I think जब मैंने अपनी पहली फिल्म डायरेक्ट की वो कबीर खान से बहुत पहले थी, लेकिन I've been following his films from New York to Tiger to बजरंगी भाईजान, now Tubelight. इनमें एक खासियत है क्या, he creates a world, वो एक दुनिया क्रिएट करते हैं। जब मैं उनकी फिल्में देखता था तो एज अ टेक्नीशियन, in fact I didn't think that I would have the opportunity to be on the same set as Kabir, because I can't be an assistant anymore, but I got this opportunity to be as an actor. So for me, doing this film was actually a learning process where he handles the production, and he does everything with a lot of ease. So for me, this film has been very special. It's been a learning process. The kind of cinema that I got to be a part of practically, as an actor, as a technician, I've got a lot this Eid, inshallah, the film that is releasing, I've got a lot to learn from that film. So I'm really grateful for the team that I'm a part of this film, and I hope that this team stays together and works together. They're a beautiful team, from Amar to Salman Khan Productions to Kabir Khan Productions, and they make some great films. We might do a sequel to this, LED.
Salman is Salman here on towards your right. LED light. On the right. Yeah, Lipika, how are you? सलमान ये आर्मी बैकग्राउंड पे उठाई गई है इस कहानी, तो क्यों और कुमाऊं रेजिमेंट ही क्यों? एंड वी कैन सी पिछली फिल्मों से मैं ये नोट कर रही हूँ बहुत बाद में आए हैं। ये जवाब देंगे। अच्छा, लेकिन आपके जो पैट्रियटिज्म है, वी कैन सी योर पैट्रियटिज्म, यू नो, तो what does patriotism mean to you? Basically, this is a story about, you know, two brothers based at that point in time, जब के वो इंडिया चाइना वॉर हुआ था, कि एक भाई जाता है वॉर के लिए, दूसरा भाई मिन्नतें मांगता है कि ये वॉर ख़त्म हो जाए ताकि वहाँ के सोल्जर्स वापस चले जाएं, हमारे सोल्जर्स वापस से आ जाएं। तो ये है, और उसका यकीन कैसे अपने भाई को लेके आता है या नहीं लेके आता है, वो आप देखिएगा पिक्चर में। जहाँ तक मुझे याद है 62 की जो वॉर हुई थी, चाइना वॉर, तो जैसे अपनी इंडियन आर्मी पहुंची थी तो सीज फायर हो गया था। मुझे याद नहीं है, सीज फायर हो आपको गया याद था। होगा। नहीं, कबीर साहब, सीज फायर हो गया था 1 महीने बाद हुआ था 62 में। जी, सीज फायर 1 महीने बाद हुआ था। अच्छा जी, so it's set in 62 and the reason why it's set in Kumaon is because the Kumaon regiment was one of the most active regiments in both the fronts of the war, the east and the west, and that's why Sohail's character is a soldier who's recruited. My father had gone for the war. Sorry? My father had gone for the war. At the time of ceasefire? Ceasefire. And he came back, ceasefire पहुंचते से तो ceasefire. I think late पहुंचे होंगे क्योंकि 1 महीने बाद ceasefire हुआ था। नहीं, तो जैसे उनकी रेजिमेंट गई थी तो ceasefire हुआ। आपको ये बड़ा ही क्लियरली याद होगा क्योंकि उस वक्त आप होंगी 25-26 साल की। नहीं, मैं 70 साल की थोड़ी हूँ। Shilpa, you have a question? Yeah. Okay. Hi, Salman. A role like this must be difficult to play in the part that you have to convey it with a lot of empathy and sensitivity, and it can be very easy to go over the top. So how did you find that right balance? ये नई बच्ची पढ़ लिख के आई है। See, sweetheart, when you sign a film, no? So it's all in the screenplay, it's all in the story. So when if you can visualize that character, if you can walk the character, you'll be able to do the character perfectly well. So out here, it's not only walking, it's also the way he talks is very different. You know, he's pure. So to do a pure character is like the most difficult thing, there is, because, in our lives, we're not like the most purest of people. So to portray someone like, maybe like a character from Hum Aapke Hain Kaun, or portray someone from Bajrangi Bhaijaan, or Tubelight, is the most difficult thing, because suddenly the hero of, that man's ego, कि मैं ऐसा perform करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं, put an action sequence here, and suddenly, I will dance like a proper step. So that becomes a big challenge in a film like this. To maintain that simplicity, the honesty, and the purity of the character is like the most difficult thing that one has to do in this, a film like this, because everyone, tends to get greedy, everyone wants to, prove themselves. So out here, the simpler it is, the better. And it is your own personality that goes against you in films like this. In Frame Ratans and Bio, you said it was transformative in a way that you felt like you became a better person. Did this film also help in that? I'm just getting better and better. Hi, Kabir. This is Neeru from E24. मेरा सवाल आपसे है. Where are you, ma'am? Yeah, hi. Generally, जिस तरह का इंसिडेंस फिल्म में दिखाया गया है, चाइना वॉर के अगेंस्ट सेट किया गया है कि एक ब्रदर मिसिंग है और एक भाई उसको ढूंढने के लिए जा रहा है, लेकिन इस तरह के इंसिडेंस ये हमने नहीं बोला, ये आपका इन्फ्लुएंस नहीं, जो भी हम ट्रेलर में देख रहे हैं, ट्रेलर से जितना समझ में आ रहा है, तो इस तरह के इंसिडेंसेस जो हैं वो पाकिस्तान एलओसी पे बहुत होते रहते हैं कि फैमिलीज जो वहाँ रहते हैं उनके मेंबर्स कोई ना कोई पाकिस्तान की साइड में या पाकिस्तानी इंडियन साइड पे मिस हो जाते हैं, और ऑब्वियसली लोग उनको बहुत ढूंढ रहे हैं। तो लेकिन आपने कहानी वहाँ सेट ना करके आप इसको बैकवर्ड लेके गए, 62 चाइना वॉर के अगेंस्ट आपने सेट किया। क्या ये एक वजह है कि पाकिस्तान के साथ बजरंगी भाईजान इनके लिए वापस से रिलीज कर देते हैं? नहीं, नॉट लाइक दैट।
मतलब कि क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान के साथ जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमेशा तलखी हो जाती है, तो इसीलिए आपने इसको सोचा कि ये चाइना वॉर के अगेंस्ट सेट किया जाए? हमने बजरंगी भाईजान में पाकिस्तान के बारे में बात करी थी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। रीजन वो नहीं है, आई थिंक एवरी स्टोरी हैज अ डिफरेंट रीजन व्हाई इट्स सेट इन अ सर्टेन लोकेशन और सेपरेट टाइम। तो जब आप फिल्म देखेंगी देन यू विल रियलाइज कि कुछ और एलिमेंट्स हैं इस कहानी में जिसकी वजह से हमने इसको 1962 में सेट किया है। और आई लाइक टू से दैट 62 में सेट है, लेकिन जो इश्यूज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आज भी बहुत रेलेवेंट है। इनफैक्ट वन ऑफ द रीजंस आई पिक्ड दिस स्टोरी इज बिकॉज इट्स अ वेरी रेलेवेंट स्टोरी टुडे अबाउट द इश्यूज दैट इट ब्रिंग्स अप। ऑब्वियसली ट्रेलर में हम सब कुछ नहीं आपको बता सकते, जब आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा कि इसका क्या रेलेवेंस है आज के लिए। हाय सलमान, कांग्रेचुलेशंस टू यू। एक मिनट कबीर, इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जिस तरह से हमने जैकी चैन को वेलकम किया और जिस तरह से उन लोगों ने दंगल को इतना ऊपर लेके गए, क्या आपकी फिल्म भी इसी कड़ी में आगे बढ़ेगी कि उन दोनों के जो रिश्ते हैं वो भावनात्मक रिश्ते लोगों के दरमियान फिल्मों के द्वारा बढ़े? इसमें आपकी फिल्म भी एक अच्छी कड़ी बनेगी या फिर? जी कोशिश तो रहेगी, लेकिन चाइना का अलग एक सिस्टम है। चाइना का एक कोटा सिस्टम है जिसमें वो साल में सिर्फ 32 फिल्में रिलीज करते हैं जो बाहर से आती हैं। अब उसके लिए आपको अपनी फिल्म सबमिट करनी पड़ती है, वो उसको देखते हैं, अगर उनको लगा कि ये उनके लिए अप्रोप्रिएट है, उनके सेंसर उनको उसको पास कर देते हैं, तब फिर जाके आप रिलीज का प्लान करते हैं। तो कोशिश रहेगी, हम चाहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें एक चाइना कनेक्शन है, कि वहाँ भी लोग देखें, लेकिन वहाँ रिलीज होगी या नहीं होगी हम सिर्फ बाद में बता पाएंगे जब वो पिक्चर देख लेंगे। Kabir, hi Salman, on your left, you're Sohail here. Congratulations to you and the entire team. यहाँ पर, हाँ। कभी लाइफ में किसी को आपने ट्यूबलाइट कहा या आपको किसी ने ट्यूबलाइट कहा है, मतलब कभी ऐसा कोई मौका हुआ, और कोई ऐसी बात जहाँ पर थिंग्स आर इम्पॉसिबल बट आपको बहुत यकीन हो, कोई चीज़ ऐसी कोई घटी हो और थिंग्स हैव हैपेंड एक्चुअली, यकीन पे ही दुनिया कायम है भाई। और ट्यूबलाइट अभी तक तो मुझे किसी ने नहीं बुलाया, शायद इसके बाद बुलाना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद। कबीर, राजीव हियर। कबीर, चाइना, जी सो चाइना कनेक्शन क्या है वो, मतलब आप अगर फिल्म देखें तो बेहतर रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हाँ उसका बैकड्रॉप जो है फिल्म का वो 1962 वॉर है, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हुआ था हमारा, वो बैकड्रॉप है। और उसकी वजह से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हुई थी हमारे मुल्क में जो एक्चुअली हम लोग जानते नहीं हैं, और वो भी मैंने डिस्कवर किया था जब मैं ये फिल्म का आइडिया मेरे दिमाग में था। कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो हम जिसके बारे में हम बात करेंगे फिल्म में। Kabir here. This film we have been reading a lot of this film, hearing a lot about this film, and at one level we also heard it's an Indo-Chinese love story. Nothing was shown of the Chinese actress Zuzu, who's there in the film. Yeah, sorry, sir. So it's written as it's written as Zuzu, but she pronounces it as Juju. Yeah, whatever. I mean, she's not whatever. She's not been shown. So what is that a deliberate reason, or we are talking about two brothers now and the war and everything? See, a film obviously has many more aspects to it than what is displayed in a trailer. So there are many more sort of sub stories and subplots in the film. There are many more characters. So सब कुछ नहीं दिखाते हम ट्रेलर में, एक थोड़ा सा एक झलक दिखाते हैं। Love story जैसे initially it was said to be an Indo-Chinese love story. अब वो है या नहीं है वो आपको फिल्म देख के you'll have to discover it for yourself. मिस्टर अमर, मेरा सवाल आपसे है कि आप को प्रोड्यूसर भी हैं इस वो लोग, एक सेकंड, किस तरह को प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, तो आपका क्या यकीन है इस फिल्म के साथ, क्योंकि रिलीज के पहले अभी लगभग 1 महीने का वक्त बचा हुआ है? Yeah, very difficult question. यकीन सिर्फ ये है कि कबीर has made a really good film. We've tried to be, we've really tried to make the film correctly. Whether it's the production part of it, whether it's distributing the film now, we've picked some appropriate partners. We're trying to make this film, give this film the kind of pedestal that it needs. But yeah, the starting point is that Kabir has made a really, really good film, and बस यकीन ये है कि the audience will love the film. सलमान, मेरा सवाल आपसे है, सलमा जी जुड़ी हैं इस फिल्म से, तो उनको आपने मनाया कि आप जुड़ो इस फिल्म से? ये such a waste of the last question था ये। Actually, we'll take one more after this. So we're taking one last question. One last question. It is. किस तरफ? We're here because of our parents. अगर माँ का नाम, बेटे के नाम से पहला नहीं आए तो फायदा क्या? One question. Okay.
ओह, आपकी आवाज। करेक्ट भाई। Yes, we are taking one question from there. बाहुबली के पहले वाले के बाद हम आए बजरंगी, हाँ, और फिर दूसरी वाले के बाद ये ट्यूबलाइट। तो हमारे सीईओ साहब के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, हाँ, हमको इतना फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इनके ऊपर बहुत प्रेशर है। No, it's a phenomenal success. You know, Bahubali, it was amazing. I haven't seen the film yet. I'm going to see the film, but this doesn't matter. Doesn't matter. हर एक फिल्म की एक तकदीर होती है। अब इस फिल्म की ये तकदीर है, इस फिल्म की तकदीर देखेंगे कि कितनी बड़ी कितनी छोटी है। No, but it's lovely. No, but it's lovely when a film comes and breaks that records. It just gives a new yardstick. It's so when I mean it's so lovely that Bahubali has come and done something like this. Yeah. कबीर, आपने हिंदी सिनेमा में जो नैरेटिव है वो बदलने की कोशिश की है। लड़का लड़की की प्रेम कहानी से आप पॉलिटिक्स लेकर आए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लेकर आए, लेकिन हिंदी लोगों को, हिंदुस्तानियों के फिल्म देखने का पैटर्न है।